Namaskar, Jai Hind, ladies and gentlemen. Now, time for your story. This was the yesterday picture just posted. Here you can see there's a man who's sitting under a tree, and there's a student here. So, देख के एकदम क्लियरली पता लगता है कि एक म्यूजिक क्लास हो सकता है जिसमें ये एक टीचर है और एक स्टूडेंट है एंड इट्स ए क्वाइट ऑफ ए ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग अंडर द ट्री. सो थोड़ा सा ये नॉर्मल उससे अलग है कि इट्स नॉट लाइक स्कूल म्यूजिकल फेस्ट और म्यूजिकल क्लास एक उसमें है. लेट्स सी द स्टोरी व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी वी हैव गॉट. अगेन एज आई टोल्ड, पहले भी मैंने आपको बताया कि नाउ वी कीप चेकिंग कि कुछ स्टोरी है जिसमें थीम बहुत क्लियर होता है, जैसे कल का था और ये जो हमने जो कल डिस्कस किया था वो लाइब्रेरी वाला, और एक ये है. कुछ थीम ऐसी है जो बहुत क्लियर नहीं होती. उससे पहले जो बस वाला सीन था, तो इसमें थीम क्लियर होने के बावजूद भी स्टोरी में बहुत डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि हमने कल भी देखे थे. लेट्स सी विद सम स्टोरी. पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमें जैसे लाइक आप ये वाला एक स्टोरी है, बीइंग ए चाइल्ड ऑफ इवॉल्विंग जनरेशन. सो हमें rather than this, Rohan is also a pop song listener. He used to vibe. Rather than this, I mean, we can start directly with the introduction. We'll talk about the hero's name, age, fashion, and place where he's from. ये चार पांच चीज अगर आती है तो introduction complete होता है. Let's see what he has written. He used to vibe on the rock songs, having tunes only, sometimes no meaning. On his birthday, his father gifted him a sarod, an instrument of Indian origin. His grandfather also remembers days when melodious songs were made using sarod. He tried to play it successfully, and the sound really made goosebumps to Rohan. He feels the pleasure and requested his grandfather to help him in learning. His mind became stable as well as innovative. Later, he thanked his father for that present. स्टोरी ठीक है, अच्छा स्टोरी है इन द सेंस की थीम सही है, लेकिन उसने क्या किया? उसने ना तो देखो कुछ सीखा है. उसने सिर्फ आपने लिखा है रोहन ही फील्स द प्लेजर रिक्वेस्ट हिज ग्रैंडफादर टू हेल्प हिम इन लर्निंग. हिज माइंड बिकम स्टेबल एज वेल एज इनोवेटिव एंड लेटर ही थैंक हिज फादर फॉर दैट प्रेजेंट. सो जो एक्शन जो आने चाहिए थे वो बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प आपने एक लाइन में लिख दिया है, और बाकी पूरा उसका जो एक प्रेमेबल सा बना के आपने सेट कर दिया है. सो अच्छा थीम है, but the story could have been much better in terms of the action, the way you've written, and also I may not go ahead with this kind of story. The theme is okay. Now it depends on how you narrate and take in the discussion. Vinayak was a 16-year-old boy has a keen interest in listening party and rap songs. His grandfather loves to play veena, but he never paid attention to it. But one day, when his grandfather was playing veena, he listened it. He was filled with pleasure, melody, and felt the real rhythm and vibe. Vinayak collected his pocket money and gifted his father on his birthday a new veena and requested him to teach him how to play veena. Vinayak and his grandfather became a good music partner. Vinayak practiced after coming to school daily and he used to play veena in his music class. Also, he used to learn new things about veena by his teacher, and grandfather became the best music player in his school. Now, thing is all right, but it is what's her name? Shruti Singh. I mentioned earlier also, not bring out everywhere money. जैसे ही आपको लगा ये है तो आप एक अपनी पॉकेट मनी जोड़ के एक वीणा ग्रैंडफादर को गिफ्ट करते हो उनके ऑन हिज बर्थडे. तो आई मीन व्हाई डिड यू वेट ऑल दिस थिंग्स? स्टोरी में वो ये फालतू का वो मेरे को लगा. अदरवाइज स्टोरी अच्छा है, थीम बढ़िया है, एंड वी कैन गो हैड. आई मीन गुड इम्प्रूवमेंट इन स्टोरी वी कैन सी. Music competition in village, wanted to participate. He went to Ramchand, forget about was a great and renowned winner player of his village to learn more. Started according to Ramcharan. He also showed about his vocal skill. Eventually, when the day came, he performed well in the competition. People admired his talent. Teacher both were happy. As a ND candidate लिखा है क्योंकि I can understand 18 year old बनाया है and then you said recently completed. It's a good story. Generally इसमें सारी चीजें जो आना चाहिए. So I'll go ahead, with this kind of story. However, action could be further in detail अगर हम लोग को improve करना है. But I'll go ahead. If you narrate it well, I will go ahead with this story. Now, Rishabh. Ram learning sitar. Ram's family owns a farm and Ram helped his father in it. He also loved classical music, but he could not do much in it as he started to help his father. One day, working in farm, he found Raghuraj playing sitar under a tree, and he loved it, so he asked him to teach him.
As he was promoting a Tehsil level competition, he agreed to teach him. Ram puts all his effort in learning process daily and purchase sitar too. He practiced with self daily in early morning and with Raghuraj after lunchtime. Daily practice made him good and he performed really well until once in competition which held in town. He won the competition. Thank his Guru Raghuraj and his father for supporting. He was very happy to know classical. Started composing and teaching the spider and the again a good story. I will again go ahead with this kind of a story. However, it's also depend how to narrate your story. तो अच्छा स्टोरी है लेकिन उसको नरेट करने का भी बच्चे एक आर्ट आना चाहिए. So that way, I mean, I'll go ahead. And most of the story, because I have gone through so many stories, and I found most of the stories on the same line and theme. इसमें ज्यादा किसी को प्रॉब्लम नहीं है. एक दो बच्चों ने कुछ कुछ नेगेटिविटी या अननेसेसरी चीजें कॉम्प्लिकेटेड करने का कोशिश किया है, वो आपको अवॉइड करना है. यू डोंट ब्रिंग आउट इसमें पॉवर्टी, कोई गरीब है या ऐसा है सब करके. तो ये सब आपको नहीं कर. अब नॉर्मल आप लेके जाइए उसको स्टोरी को कि नॉर्मल स्टोरी है. इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी, सिंपल पिक्चर, उस पर एक सिंपल स्टोरी आना चाहिए. When you talk about action in these kind of story, here what is expected is your effort. I told you ki the kind of passion you show about learning and or maybe how to promote it. Hero can be anything, either the student or this is the teacher can be. नाउ एक हो सकता है कि जो थीम है और जिसमें निकल के आया कि ये स्टूडेंट है किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, इसका इंटरेस्ट है, उसको ले में जा सकते हैं. एक दूसरा है मे बी द प्रमोटिंग इंडियन इंस्ट्रूमेंट एंड हाउ टू गो अबाउट इट. इन क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर कुछ हो सकता है, हाउ वापस से कैसे उसको रीइंस्टॉल करते हो इन लोगों के दिमाग में, कैसे वापस अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ दिस क्लासिकल म्यूजिक का जो है वो भी बहुत अच्छा हो सकता है थीम. एंड मोस्ट ऑफ यू गाइस आई मीन रिटर्न लाइक दिस ओनली. तो या तो आप स्टूडेंट बना रहे हो या किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो. ओनली थिंग डू नॉट ट्राई टू पुट अननेसेसरी नेगेटिविटी या बेचारापन. बहुत हद तक काफी बच्चों ने तो अभी रिमूव कर दिया है, लेकिन अभी भी आई सी समटाइम स्टोरी वेयर आई डोंट फाइंड नो वे व्हाट आई शुड से कि वो जो लेवल जाना चाहिए ना. अब एक अच्छा खासा नॉर्मल स्टोरी है उसमें फालतू की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने. गरीब है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो जो दो कुछ स्टोरी मुझे मुझे मिला, आई थिंक दिस थिंग कैन बी अवॉइड. So let's go back more. Here somewhere there was an event in Mandir and we had to play the sitar. जैसे कुछ स्टोरी है चलिए ये उसी पे लिखे. हर ये 16-year-old boy from Yesigan Rajasthan is an only son from a family of generational instrumental, especially sitar. He and his father also. His guru have come away from village where his father have Patsala, I guess, where he teaches to use instrument to other children of village. And after all the other students left, Hari and his father worked on the vocals of Hari and did some practice on sitar as well as there was an upcoming event in Mandir where he had to play the sitar. And it seems to be a very incomplete story. मोहित आई विल नॉट गो अहेड विद दिस. देखो थीम वही है, चीज वही है, लेकिन आप कैसे लिखते हो या आप बताते कैसे हो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी स्टोरी में. सो आई विल नॉट गो अहेड दिस स्टोरी. रीजन बीइंग इट सीम्स टू वेरी इनकम्प्लीट स्टोरी, देयर इज नो टेक अवे. तो ये आपका डिफरेंस होता है. नाउ अगेन अरुण एज 40 belongs to near village of West Bengal. Say only nowhere it is mentions 14 है 16 आपको गेस करना है. तो 14 इज टू लेस बिकॉज हम पहले भी बोल चुके हैं कि आपको अपनी एज से कोरिलेट करना है. आई एम श्योर इफ यू राइटिंग स्टोरी हियर यू मस्ट बी 16 प्लस. तो वो थोड़ा आपको ध्यान रखना है. He was not like other student of his class who like the modern pop or rap music, but was fond of classical music. Now again, इस ऐसे स्टोरी में लाइक अमित वर्मा ने लिखा है, you need not to bring someone else into a negative way. Like he was not like other student of his class who like the modern pop or rap music, but was fond of class. आप simple लिखिए, he was fond of classical music. So one day he decided to learn sitar from a teacher who lived in his village. He did not have the sitar, but seeing his dedication, the teacher gave him his own sitar and taught him. After a few years, Arun became a professional sitar player and pursued his career in the field of music. He decided to come back to his teacher and offered him a new sitar as a token of respect. Teacher was happy at his success and took his gift and gave him gifts.
टीचर ने तुम्हें दे दिया, तुमने उसको बेटा ये वापस कर दे सितार बाद में जब आप हो गए हो। इस स्टोरी में भी द समथिंग विच इज वेरी ग्लेरिंग एंड आई विल नॉट गो अहेड विद दिस रीजन बीइंग वन इज एक तो आपका एज ग्रुप देखिए, आप वहां देख रहे हो 14 ईयर को। दूसरा, इवन टू लर्न समथिंग टू बी डिपेंडेंट ऑन समथिंग नॉट डेडिकेशन, बट आपने वर्ड यूज किया डेडिकेशन, लेकिन आपकी स्टोरी में मुझे डेडिकेशन कहाँ दिखाई दी? डेडिकेशन तो मुझे टीचर का दिखाई दिया है, लाइक व्हेन ही dedicated towards teaching the student. So आपका hero itself looking for some kind of a help and later on कोई वही चीज वापस करता है as a gift you are saying it. So I will not go ahead and these things to be avoided which I told earlier also. तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है, अदरवाइज द स्टोरीज आर गुड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जो चेंज हो रहा है आपकी स्टोरीज में, दैट आर गुड। नाउ अब थोड़ा सा एक और हल्का सा कंसेप्ट है, किसी ने एनुअल फंक्शन पे लिखा है इन क्लास 10th in nearby government school. Okay. If I again keep pointing this out, Ramesh studying in class 10th in a nearby government school. And I told you also be very specific. पहली बात तो Ramesh, then you can write his age. Okay, class 10 student from particular government school का नाम लिखिए. Don't say nearby. How will I come to know where nearby, which place he is in right now? I'm not able to correlate. He was fond of music and part of music group in his school also. As the school annual function day was coming, he told his grandfather to teach him the playing of sitar as a new instrument in function. So they always go to the field and his grandfather teach him sitting under the tree. This is a good part and at least he tried to inculcate जो perception है वो इसमें डालने का कोशिश किया। Ramesh learned the concept of string and playing according to the tune. Later he told his music teacher to play sitar also in the function and he agreed. लेटर ही परफॉर्म वेल। आई मीन टू मच ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन मुझे थोड़ा सीखे, हर सेंटेंस आप लेटर से स्टार्ट करते हो, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। So he performed well in his annual function and was happy with it. He thanked his grandfather and after that he started teaching sitar playing to his juniors. So the story is good and in fact I mean say I will go ahead with this story if narrated well. But before you represent story, I mean आप इस ऐसे सेंटेंस से नहीं करोगे। इंट्रोडक्शन है मतलब अगर अच्छा होगा तो ज्यादा बेटर है, राइट? एंड अदरवाइज स्टोरी इज गुड एंड विद दिस आई थिंक नाउ यू गेट द बेसिक आइडिया दैट्स यहाँ पे किसी का हॉबी वाज टू नो अबाउट वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वन डे डिसाइडेड टू नो अबाउट रुद्र वीणा कम केस 40 years had a knowledge about it so he had taught Rahul some basic and it's very very short. I mean I will not again go ahead. ये कोई स्टोरी नहीं है, ये आपने बस दो तीन लाइन ऐसे लिखनी है एंड दैट्स ऑल। दिस काइंड ऑफ स्टोरी आई कैन नॉट एक्सेप्टेड। आप 10 से 15 सेकंड का स्टोरी बोल के नहीं बोल सकते हो कि आपने एक स्टोरी बनाया है। सो उस पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द टेक अवे अगेन विद दिस विल वाइंड अप एंड व्हाट आर द टेक अवे फॉर द टुडे स्टोरी इज पहले तो परसेप्शन, ठीक है, दैट इज राइट, टुडे इट वाज गुड थिंग। अपने लिखा है कि ये थोड़ा पहाड़ का थीम है, आउटडोर थीम है जहाँ पे अंडर ये सब आ रहे हैं, लेकिन स्टोरी इन डिटेल, टेक इट इन अ बेटर वे, डू नॉट अननेसेसरी इनकलकेट नेगेटिविटी, डू नॉट पुट समवन एल्स किसी और का टेस्ट खराब है और आपका टेस्ट अच्छा है, डायरेक्टली टॉक अबाउट योर ओन टेस्ट।